So hello everyone. At this class I'm going to discuss about sequence and series. I want to give some basic idea about sequence and series. Remember one thing, this sequence and series chapter is there in your NCERT also, and it is important chapter for board purpose as well as for entrance exam. ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी. वेटेज ज्यादा रहता है, मार्क्स ज्यादा रहता है. इवन फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इन एंट्रेंस एग्जाम इन जेईई मेंस. ओके, so already I told you that this 1 week I will discuss the basic things. That means I want to give some basic idea about logarithm. So already I have discussed about logarithm. Today I am going to discuss about sequence and series, and after this chapter I want to give some basic idea about trigonometry. Okay, so this 1 week we will discuss only the basic things, right? So चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज. सो चैप्टर का नाम अगर सीक्वेंस एंड सीरीज है तो देन यू शुड नो द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड द मीनिंग ऑफ सीरीज, है कि नहीं? चैप्टर का नाम पता है सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीरीज होता है क्या, ये सब का मीनिंग तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? सो सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस. So listen carefully. When we write few numbers according to some definite rule, then it is called a sequence. Okay, then it is called a sequence. Say for example, I am giving the example of sequence. Okay. For example, say 3, 6, 9, 12, 15 and so on. I have written some numbers 3, 6, 9, 12, 15. Whether these numbers are following any rule, the definition of sequence is when we write a few numbers according to some definite rule, that is called a sequence. Now 3, 6, 9, 12, 15 and so on, whether these numbers following some definite rule or not. Yes, the rule is, here the rule is multiple of 3. Yes or not? 3, then 6, then 9, then 12, then 15. These are what? Multiple of 3. That means we can say that this is one sequence. These numbers are following some definite rule, which means it is in sequence. Whether it is in ascending order or in descending order, it is in ascending order. Yes or not? Small to big मतलब ascending order में है. तो एक बात याद रखना है कि सीक्वेंस में हमेशा ascending order में ही होगा बोल के ऐसा कोई बात नहीं है. Descending order में भी हो सकता है. But it must follow, the numbers must follow some definite rule. Whether it is in ascending order or in descending order, it doesn't matter. But the numbers must follow some definite rules. Rules means like this, multiple of 3. एक sequence में एक definite order follow किया है. So this is one example. One more example you can take. Say 5, 10, 15, 20, 25 and so on. These numbers are also following some definite rule. Multiple of 5. So that means it is also a sequence. Okay. So the set of such numbers which following some definite rule is called a sequence. The set of such numbers, सब यहाँ पे मैं जितना numbers लिखा वो सब numbers को मिला के एक set form होता है. Set means collection of some well defined objects, or you can say elements also. Okay, so I have written some numbers. So the set of such numbers which following some definite rule is called a sequence. While, listen carefully, while the series so formed
is called as progression. तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसको प्रोग्रेशन बोला जाता है. तभी बोला जाएगा कि जब ये सीक्वेंस को सीरीज में लिख सकते हैं. देखो मैं चैप्टर का हेडिंग जो है उसके बारे में अभी बता रहा हूं. मैं अभी तक उसके अंदर नहीं गया, चैप्टर के अंदर नहीं गया. ठीक है. सो सीक्वेंस के बारे में मैं डेफिनेशन दिया. द सेट ऑफ सच नंबर्स which following some definite rule is called a sequence, while the series, तो अभी चलो आ गया सीरीज के बारे में. while the series so formed is called as progression. while the series so formed is called as progression. तो सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब ये है कि सपोज पकड़ लो कि यहां पे ये इतना ही नंबर्स है, तो दिस इज वन सीक्वेंस, राइट. जब ये एलिमेंट्स को हम लोग प्लस साइन से ज्वाइन करते हैं, जब ये नंबर्स को हम प्लस साइन से ज्वाइन करेंगे, देन इट विल बी ए सीरीज. इट विल बी अ सीरीज. ओके. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस पता होने से ही सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ यू नो द सीक्वेंस देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द सीरीज. तो सीक्वेंस का मतलब क्या है? वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय कॉमा. कॉमा देके रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट्स को. मतलब एक सीक्वेंस एक डेफिनिट ऑर्डर में है. और सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस का जितना नंबर्स है वो सब नंबर्स को जब प्लस साइन से, प्लस पॉजिटिव साइन से ज्वाइन किया जाता है, देन इट विल फॉर्म ए सीरीज. ओके. सो इसीलिए डेफिनेशन में क्या बोला गया है आफ्टर द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? while the series so formed, while the series so formed, तो यहां पे सीरीज फॉर्म हुआ ना एक. so while the series so formed is called as progression. तो ये सीरीज को प्रोग्रेशन बोला जाता है. while the series so formed is called progression. ठीक है. so this is the meaning of sequence and series. तो सीक्वेंस का मतलब क्या है? when we write a few numbers according to some definite rule, so then it is called a sequence. And while the series so formed, this is one series, while the series so formed is called as progression. Okay. while the series so formed is called as progression. तो सीरीज को कैसे डिनोट किया जाता है? एलिमेंट्स के बीच में प्लस साइन बैठा के डिनोट किया जाता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन. जनरली वी कैन क्लासिफाई अ सीक्वेंस इनटू 5 पार्ट्स. वी कैन क्लासिफाई अ सीक्वेंस इनटू 5 पार्ट्स. नंबर 1, arithmetic progression. In short, I am writing AP, arithmetic progression. I think all of you have idea about AP, arithmetic progression. Class 10 में मिला है. Okay? So, number 1 is arithmetic progression. Number 2, geometric progression. Geometric progression. Number 3, harmonic progression. HP, that is harmonic progression. Number 4, arithmetico geometric progression. Arithmetico geometric progression. In short, you can say AGP. It is the combination of arithmetic and geometric progression. Arithmetico geometric progression. In short, you can say AGP. Okay, arithmetico geometric progression means it is the combination of AP and GP. And the last one is spatial series. Spatial series. Okay, the last one is spatial series. So we can classify sequence into 5 parts. So these are the 5 parts. Mainly in your NCERT, we are given about AP, GP and spatial series. ठीक है. Arithmetic progression है NCERT में, arithmetic progression है, geometric progression है and spatial series है. So इसका मतलब है कि बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ ये 3 पार्ट ही पढ़ना है, AP, GP and spatial series.
Whereas for entrance exam, for JEE mains or JEE advanced or any other entrance exams, you have to study all the 5 parts. Okay, you have to study all the 5 parts. So since I am discussing only the basic of sequence and series, so today I will give some idea about arithmetic progression. Just basic thing मैं discuss करूंगा जो already तुम लोगों को class 11-10 में मिला, वही मैं फिर से एक बार just revise type, revision type मैं discuss करूंगा. ठीक है? Today I am going to discuss about AP. In the next class I am going to discuss about GP or HP, right? Okay, just basic idea दूंगा क्योंकि अभी तक main part में नहीं गया. Main part next week से शुरू होगा. ठीक है? So this week we will discuss only the basic things, right? So this is all about sequence, series and progression and the types of sequence. Now I am going to discuss about arithmetic progression. About arithmetic progression. सबको arithmetic progression के बारे में idea है. So फिर से मैं वही एक बार repeat करूंगा. Arithmetic progression, ठीक है? Arithmetic progression. Let us consider a sequence. Let us consider a sequence, say 5, 7, 9, 11, 13, and so on. Take one more example, say 3, 8, 13, 18, 23, and so on. दो example दिया. Okay, let us consider a sequence. 2 sequence I have written. Okay, तो ये जो sequence लिखा, whether this sequence is in arithmetic progression or in geometric progression or in harmonic progression कैसे पता चलेगा? एक बात याद रखना है, एक चीज देखना है यहाँ पे, जो फर्स्ट सीक्वेंस में लिखा यहाँ पे 5, 7, 9, 11, 13, check their common difference. Check their common difference. Their difference actually. I should not say common difference. Second term minus first term. The first one is, first number is 5. So first term is denoted by A1. Yes. Second term is denoted by A2 like this. Third term A3. Fourth term A4. Fifth term A5. So A2 minus A1. इसका मतलब second term minus first term क्या होगा? 2. Third term minus second term 2. Fourth term minus third term 2. Fifth term minus fourth term 2. तो इसका मतलब क्या मिला मुझे? That is, their difference is constant, fixed. Yes or not? Their difference is in this sequence, the difference between the 2 consecutive numbers. ऐसा बोलना चाहिए कि the difference between the 2 consecutive numbers is fixed. सब में 2, 2, 2 आया. Yes. Let us check the second one. Second sequence. Difference 5, again 5, again 5, again 5. So here also the difference between the 2 consecutive numbers is fixed, that is 5. So if the difference between, listen carefully, if the difference between any 2 consecutive numbers of any progression is constant, if the difference between 2 consecutive numbers of a progression is constant, then that progression is called arithmetic progression. Okay, that progression is called what? Arithmetic progression. So this is the definition of arithmetic progression. So how can you identify whether the sequence or whether the progression is in arithmetic or geometric progression? Check their difference. Arithmetic progression में तो फिर क्या चेक करना है? डिफरेंस. अगर डिफरेंस फिक्स्ड हुआ तो डिफरेंस कैसे चेक करना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, लाइक दिस यू हैव टू चेक. तो सबका डिफरेंस चेक करने के बाद, कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस चेक करने के बाद अगर वो डिफरेंस फिक्स्ड हुआ तो, कांस्टेंट हुआ तो, देन इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. राइट? सो ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन. सबको आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन. चलो ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं समझाना चाहता हूं. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? 5. राइट हियर 5. What is the second term of this sequence? 7. So 7
can be written as 5 plus 2. Yes. What is the third term of the sequence? 9. Can be written as 5 plus 2 into 2. Yes, 2 2s are 4. 4 plus 5, 9. What is the next term? 11. Can be written as 5 plus 3 into 2. 3 2s are 6 plus 5, 11. Next one, 13. Can be written as 5 plus 4 into 2. 8 plus 5, 13. Yes. Similarly, look at the second sequence. This one is the first example. This is the second example. Look at the second sequence. First term of this sequence is 3. Write as it is 3. जैसे कि मैं यहाँ पे भी लिखा first term को. Second term is here 8. Can I write 8 as 3 plus 5? जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस मिला उसको ही मैं ऐड करके जा रहा हूं. ठीक है, जो डिफरेंस मिला उसको मैं ऐड करके जा रहा हूं. तो यहाँ पे डिफरेंस 5 मिला इसलिए 5 को ऐड किया. इसमें डिफरेंस 2 मिला था इसलिए 2 को ऐड किया. सो 3 plus 5, 8. यस. नेक्स्ट वन इज 13. कैन बी रिटन एज 3 plus 2 into 5. Next one 3 plus 3 into 5. Next one 3 plus 4 into 5. Yes, like this it will go on. है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या किया कि फर्स्ट टर्म को जैसा है ऐसा ही रखा. फर्स्ट टर्म राइट एज इट इज. सेकेंड टर्म से क्या किया? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म प्लस 2 into common difference. First term plus 3 into common difference. First term plus 4 into common difference. Here also same. Keep the first term as it is. Then the second term you can write it as first term plus common difference. First term plus 2 into common difference. First term plus 3 into common difference. Like this it will go on. Yes. तो ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं? Because we all know that in a sequence, the first term is denoted by A1, second term denoted by A2, A3, A4, A5 like this. Okay. Do you know the common difference? जो मैं बार बार बोल रहा हूँ common difference. That common difference is denoted by D. The common difference is denoted by D. तो ये जो first sequence है, मतलब first जो example है, ये first example में D का value क्या है? 2 only. D for common difference. So D is equal to here 2. Yes. First term of any sequence is denoted by A. यहाँ पे A1 लिखा because it is one sequence. But in an AP, in an arithmetic progression, the first term is denoted by A. Common difference is denoted by small letter D. So therefore, this sequence जो मैं break करके लिखा, how can we write it as in the form of A and D? Let us check. This sequence which I have expanded, जो सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया गया था उसको मैं एक्सपांड किया. दिस स्टेप वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एंड डी ऑल्सो. फर्स्ट नंबर इज 5. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 5 एंड वी नो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए. सो दिस इज ए कॉमा दिस इज ए प्लस डी. यस और नॉट? बिकॉज द वैल्यू ऑफ डी इज 2. ए प्लस डी. नेक्स्ट वन ए प्लस 2 into D. Next one A plus 3 into D. Next one A plus 4 into D. Like this it will go on. Similarly here also common difference, the value of D is 5 and first term A is 3. Yes. So first term is A, second term is A plus D, next term is A plus 2D, third term next term is A plus 3D, next one is A plus 4D. Like this it will go on. Yes or not? Yes or not? So, in a sequence, if the sequence is in arithmetic progression, listen carefully. If the sequence is in arithmetic progression, then the numbers of the sequence can be denoted by A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, and so on. Yes? Achha. So, this is all about how to write the numbers in the form of A and D. A is what? The first term of the sequence. D is what? This is the common difference. तो चलो सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, वो सब के बारे में तो बता दिया. D how to find D? D means A2 minus A1, A3 minus A2. Like this it will go on, right? So you know now how to find the common difference and what will be the value of the first term A. ठीक है. अभी ये जो सीक्वेंस में बार बार लिख रहा हूं, लास्ट में मैं डॉट 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 दे रहा हूं. सो मतलब अगर nth टर्म तक निकलना है तो जैसे कि यहां पे मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू फिफ्थ टर्म तक लिखा.
So fifth term means here a plus 4d. तो अगर nth term लिखना है तो क्या होगा? अगर nth term लिखना है तो एक सीक्वेंस का अगर nth term लिखना है तो फिर क्या होगा? Look at here. The first term of an AP is denoted by A. Common difference is denoted by D. And the nth term of AP is denoted by Tn, small letter Tn. The nth term is denoted by Tn. So if you want to find Tn, then what will be the formula? Look at here. फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट किया जाता है? A. सो फर्स्ट टर्म को अगर A से डिनोट किया जाता है तो इसका मतलब है कि T1, it is the first term. If Tn is the nth term, so we can write T1 is the first term. So A can be written as A plus 1 minus 1 into D. Yes or not? 1 minus 1 is 0. So it means only A. T2. A plus, एक्चुअली T2 मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म में क्या होना चाहिए? एक्चुअली A प्लस D. कैसे मिलेगा? 2 minus 1 into D. 2 minus 1 is 1. 1 into D is D. Like this, third term can be written as A plus 3 minus 1 into D. Next, fourth term, A plus 4 minus 1 into D. Then, the nth term that is denoted by Tn, it can be written as A plus n minus 1 into D. Yes, if you follow the trend, if you follow the sequence, then only you can able to find the nth term. T1 में क्या हुआ? 1 minus 1. T2 में क्या हुआ? 2 minus 1. T3 में क्या हुआ? 3 minus 1. T4 में क्या हुआ? 4 minus 1. तो Tn में क्या होगा? n minus 1 होगा कि नहीं? So this is the nth term formula of an arithmetic progression. Okay? This is the nth term formula of an arithmetic progression. So if you want to find the nth term, that is the last term of the sequence, then you can use this result Tn. That is the nth term is equal to A plus n minus 1 into D. इसीलिए तो देखो जो 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टर्म जो है A plus 4D फिफ्थ टर्म, लेकिन A plus 4D आया, 1 लेस ना, तो लेस तभी होगा, फिर nth टर्म में तो भी वही होगा 1 लेस. सो nth टर्म का मतलब n minus 1. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द nth टर्म. अगर ट्रेंड फॉलो करोगे, सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो यू कैन इजिली डिटरमाइन Tn, राइट? So this is all about the nth term, or you can say the general term of an arithmetic progression. Formula is A plus n minus 1 into D. ठीक है? So this is all about the definition of arithmetic progression, the general term formula. Now, few important points are there. ये common difference के बारे में कुछ points हैं. If D is greater than 0, if common difference is greater than 0, then the progression is increasing AP. Okay, if D is greater than 0, then it is an increasing GP. Increasing GP होगा, small to big, मतलब जो sequence होगा small to big number में जाएगा. If D is less than 0, then it is decreasing GP. If D is less than, sorry, not GP, if D is less than 0, then it is decreasing AP. But if D is equal to 0, if common difference is equal to 0, then it is a constant AP. Okay, so remember these 3 points. If D is greater than 0, then it is increasing arithmetic progression. If D is less than 0, then it is decreasing arithmetic progression. And if D is equal to 0, अगर common difference का value direct 0 मिलेगा तो then it is called a constant AP. That is constant arithmetic progression. Okay, ये 3 point याद रखना है. So now I am going to discuss about the nth summation of nth term of an AP. Okay. So now let us discuss about the summation of n terms of an AP. How to find the summation. अभी तक मैं क्या डिस्कस किया about the nth term or general term of arithmetic progression. Now I am going to discuss about how to find the sum of n terms of an arithmetic progression. If, listen here, if A is the first term, D is the common difference,
of an arithmetic progression, n is the number of terms, n is the number of terms, then summation s, summation is denoted by say s, summation s can be written as t1 plus t2 plus t3 plus tn. Yes or not? If a is the first term, d is the common difference, and n is the number of terms, then summation means what? If you add all the terms, then only you will get the summation. So terms are denoted by what? T1, T2. T1 means the first term, T2 is the second term, T3 is the third term, whereas Tn is the nth term. Yes, so if you add all the terms, then only you will get the summation. So therefore, that's why we can write s equal to T1 plus T2 plus T3 plus Tn. Which implies, just now I have explained, T1 means what? First term, that is nothing but a only, plus T2 means what? Second term, that is nothing but a plus d. Yes. Third term, T3 means third term, it is a plus 2d plus Tn. अभी तो मैं प्रूफ करके दिखाया. Tn means what? a plus n minus 1 into d. Yes. So I have written the values of T1, T2, T3 and Tn. ठीक है. This is say equation number 1. S is equal to this one. This is say equation number 1. Now if you write these numbers, if you write these numbers in reverse order, then see what will happen. If you write these numbers in reverse order, then see what will happen. Then what will be the first number? Reverse order मतलब last number पहले आएगा, तो ये हो जाएगा a plus n minus 1 into d. What will be the next number? a plus n minus 2 into d होगा next number. Because the preceding term, इसके आगे जो term है, this is the last term only ना, तो ये तो मैं लिख लिया, तो इसका आगे जो टर्म है उस यहाँ पे वही लिख रहा है, तो इसका आगे जो टर्म होगा, द प्रीसीडिंग टर्म विल बी n माइनस 2. n माइनस 2 के आएगा n माइनस 3, n माइनस 3 के आगे आएगा n माइनस 4, ऐसे जाता है. ठीक है. n माइनस 1 के आगे डोंट से n, n माइनस 1 के बाद आता है n, सो n माइनस 1 के आगे जो टर्म होगा दैट इज कॉल्ड प्रीसीडिंग टर्म विच इज n माइनस 2 प्लस a प्लस n माइनस 3 into d plus then a, because we are writing the numbers in reverse order. ठीक है. लास्ट नंबर को पहले लिखना है और फर्स्ट नंबर को लास्ट में लिखा. ठीक है. Now add these two equations. I have written here equation 1 and equation 2. Add these two equations. So if I add these two equations, s plus s twice s, this is equal to, now see how to add. Just you have to add the corresponding numbers. Okay, you have to add the corresponding numbers. a के साथ a plus n minus 1 into d को ऐड करना है. फिर a plus d के साथ a plus n minus 2 into d को ऐड करना है. a plus 2d के साथ a plus n minus 3 into d को ऐड करना है. और ये लास्ट नंबर के साथ ये a को ऐड करना है. ठीक है. So if I add these two numbers, a plus a twice a plus n minus 1 into d, okay, twice a plus n minus 1 into d, plus again if I add now these two numbers, a plus a twice a plus d, look at here, d and here n minus 2 into d, which will be then n minus 1 into d only. Yes, अगर d को कॉमन लिया जाएगा तो n minus 2 plus 1, which means n minus 1 only. Plus, now if I add the third term, a plus a, again twice a, plus, if I take again d common, n minus 3 plus 2, minus 3 plus 2 is again minus 1, so n minus 1 into d होगा, plus, what will be the last term then? a plus a twice a, plus, n minus 1 into d. You can check here, सब टर्म को जब ऐड किया गया है, एक ही कॉमन टर्म मिला. Twice a plus n minus 1 into d, twice a plus n minus 1 into d, twice a plus n minus 1 into d, dot dot dot, twice a plus n minus 1 into d. मतलब कितना बार ऐड किया? Summation of n terms, मतलब n times ऐड किया यहाँ पे. ठीक है. अगर मैं 2 को n times ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा? twice n.
3 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा, थ्राइस n। 4 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो 4n होगा। तो यहां पे भी ये टर्म को अगर n टाइम्स ऐड करूंगा तो दिस विल बी देन n इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। विच मीन्स ट्वाइस s इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर s इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये है प्रूफ, ये है इसका फॉर्मूला और ये है इसका डिराइवेशन। ओके, s इक्वल टू n बाई 2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको पता है, ये क्लास 10 में मिला होगा। ठीक है, वन मोर फॉर्मूला इज देयर, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का और एक फॉर्मूला है अपार्ट फ्रॉम दिस वन, यू कैन राइट नोट डाउन दैट वन ऑल्सो, n बाई 2 इंटू a प्लस l। a इज द फर्स्ट टर्म, L इज द लास्ट टर्म। कैसे आया ये फॉर्मूला छोड़ के ये फॉर्मूला को, कैसे, दोनों ही करेक्ट है, यू कैन अप्लाई एनी वन, राइट। जहां पे जो क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया रहेगा उसमें लास्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कैसे a प्लस l हुआ, लुक एट हियर, दिस वन s इक्वल टू n बाई 2 इंटू ट्वाइस a इज देयर ना, ट्वाइस a को मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसा भी तो लिख सकता हूं, a प्लस a ट्वाइस a ही होगा, दैट इज n बाई 2 इंटू a। Now a plus n minus 1 into d, this one is what, just now I have explained, a plus n minus 1 into d is nothing but tn, a plus n minus 1 into d. So replace a plus n minus 1 into d by t, or you can write l also. L is the last term, listen carefully, L is the last term, tn is also the last term. So tn or l, anything you can write, okay. So that's why we can write n by 2 into a plus l। एक्चुअली यही फॉर्मूला से इसको डिराइव किया गया है। सो यू कैन अप्लाई फर्स्ट वन और यू कैन अप्लाई द सेकेंड वन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म का वैल्यू दिया रहेगा तो यू कैन अप्लाई द लास्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो यू कैन अप्लाई द फर्स्ट वन। ओके, so this is all about the nth term of an AP and the summation of n terms of an AP. Now I am going to discuss a few numericals. Okay.